हमारे देश को याद करके प्रार्थना करेंगे। पिछले दिनों में बारंबार साइक्लोन और बारिश होने के कारण अनेक जगह की खेती नुकसान हो गया है, कई लोग बर्बाद हो गया है और इधर उधर लोग आत्महत्या कर रहा है। हम रहने वाले देश में देश के लिए प्रार्थना करना हमारा जवाबदारी है। और न्यूज़ रिपोर्टर ऐसे कहता है कि फसल सब नुकसान होने के कारण जो भाव अभी बढ़ा है उससे भी दोगुना और भी सारी चीज़ों की महंगाई बढ़ेगा, वो हमारे लिए भी असर पड़ेंगे। इसलिए प्रार्थना करेंगे परमेश्वर देश के हालात को सुधर लाए, देश के वासियों का पाप को परमेश्वर को जताए, वो यीशु मसीह को ग्रहण करे, सच्चाई को समझे, परमेश्वर को दया करने के लिए सभी लोग मिलकर जोर से प्रार्थना करिएगा। तेरे दया का हम मसीह के कारण कष्ट उठाने वाले अनेक मसीह लोग हमारे भारत में हैं, विशेष तौर से बंदोबस्त लोगों को ही ज़्यादा मार पड़ते रहते हैं। गुजरात के कई जगहों में भी चालू हो गया है, मैसेजेस आते रहते हैं। हमें जागे, हमें प्रार्थना करें प्रभु से, प्रभु परमेश्वर लोग सीधा हो जाए, जीवन में सारे पापों को कबूल कर प्रभु के नज़दीक आने के लिए परमेश्वर मदद करने के लिए आइए सभी लोग मिलकर प्रार्थना करिएगा। हमारे देने के लिए प्रार्थना विश्वास के लिए तरफ प्रार्थना लोहो के सारे महान परवेश लोहो आत सागर गले हम प्रार्थना करिए। कई लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, मुंह खोल कर जोर से प्रार्थना करिए। जीवादि कर गले यहोवा कार्य कर गले तरफ से प्रार्थना प्राक परवेश लोहो सा कर गले हम धरे तो प्रार्थना विश्वास गर्वेच के सारे गर्वेच मार देने के लिए हम धरे तो प्रार्थना हिंदी में सॉन्ग नंबर 192 पेज नंबर 149 192 पेज नंबर 149। हे यहोवा ये दुनिया में। ताली बजाने से आवाज़ से ज़्यादा आपके गीत की आवाज़ सुनने पाए। कई लोग गीत गाते नहीं है, बराबर मुंह खोलकर सभी लोग ना पुराने गीत है सब। ये दुनिया में
All are requested to please stand up. आप सभी लोग दया कर खड़ा हो जाए। भाइयों के साइड में, बहनों के साइड में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़िए। बीच में बहुत जगह खाली पड़ी है, बराबर लाइन से बैठिए। इंग्लिश नंबर 29, पेज नंबर 22। इंग्लिश नंबर 29, 29, पेज नंबर 22।
shall be.
प्लीज बी सीटेड। आप सब लोग दया करके बैठी। हमारे बच्चों ब्रांच के द्वारा एक उपवास की प्रार्थना के आयोजन किया गया है। आप बोर्ड में दे सकते हैं, बोर्ड में डाला है, थोड़ा बड़ा अक्षर कर सकता, ठीक है। हाँ, 14, 15 एंड 16, 14, 15 और 16 तारीख गुरुवार से लेकर शनिवार तक सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक के प्रोग्राम है। वहाँ की सेवक ने कहा कि जिनको अगर आकर वहाँ रहने के लिए चाहते हैं वो रह सकते हैं। आदोई का सेवक पॉल इधर बैठा है, आप उनको नाम दे सकते हैं। जिसको रहना चाहिए तो बाकी लोगों को जाकर मीटिंग में शामिल होना चाहिए तो वहाँ दिखा है, वेन्यू है, वो वेन्यू डाल दीजिए। वेन्यू कॉन्फ्रेंस हॉल, होटल शिव इंटरनेशनल, नियर बचाओ, न्यू बस स्टेशन, दुदई रोड, बचाओ। नया बस स्टैंड जो है वो बिल्कुल रोड पर ही है, हाईवे पर है। उससे इस तरफ जाने के समय में दुदई रोड आते हैं, रोड के बगल में ही है यह होटल। रहने वालों के लिए आप पहले से पॉल भाई को नाम दीजिए, बाकी लोगों को जाकर इसमें शामिल हो सकते हैं। आप सबको आने के लिए निमंत्रण दिया है, लेकिन कॉन्फ्रेंस हॉल इतना बड़ा नहीं है, बोलता है कि 250 लोग तक बैठ सकते हैं। आप इसके लिए प्रार्थना भी करिए, जिसको जाना चाहिए वो जाकर शामिल हो सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आंख बंद करिए, प्रार्थना करेंगे। सभी लोग आंख बंद करें। Hallelujah. Our Heavenly Father, we thank you for this wonderful time you've given us, God. Father, you fill us with your Holy Spirit, Father. Thank you for giving this opportunity to worship you, God. It's a big opportunity for us, God, that we worship the living God. Hallelujah. We thank you for it, Father. Father, you speak to us with your word, Father. Amen. Hallelujah. We need your words, God. The word which brings life, the word which brings joy, the word that cheers us up, Father. Lord, we need your word, God. Enable your servant to speak your word with power and authority, Father. Amen. Hallelujah. Amen. We need your word, Father God. Amen. Change our lives. I pray for the new people who have come, Father. Amen. You touch their lives also, Father God. They need you, Father. They need salvation. They need Jesus. Amen. Hallelujah. Father, you take control of all of the meeting, Father God. I give everything into your hand, God. In Jesus' name I pray. Amen. Hallelujah. 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 That song you said, upwards I fly. How many of you know the meaning of that? Upwards I fly. Is it in your song? Did you? Which is the stanza? What's the beginning of that stanza? What's the beginning of the stanza? Will you please put that stanza? Upwards I fly. What's the meaning of upwards I fly? What's the meaning of upwards I fly? You don't know the meaning of that? Open your mouth and say that. Upwards I fly. What's the meaning of that? What's the meaning of that, man? What's the meaning of the upwards I fly? Say in your translation, upwards I fly. Say in the mic. പറന്നു മുകളിൽ പോകും. Upwards I fly. മേലെ പറന്നു പോവേൻ. മേലെ പറന്ന് മേലെ പോവേൻ. മലയാളമേ. പറന്നു മുകളിൽ പോവുക. പറന്ന് മുകളിൽ പോവുക. मुगलिल പോകും. क्या थोड़ा जोर से बोलो. माइक में क्यों आप बंद करते हैं ब्रदर? ऊपर की ओर उड़ना.
उड़ के ऊपर जाएंगे, उड़ के ऊपर जाएंगे. పైకి ఎగురుకుంటూ. That experience should be for you and for me. यही अनुभव आपके लिए और मेरे लिए होना चाहिए, But we don't do that. लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं. Neither do we fly, हम उड़ते भी नहीं हैं, nor our spiritual life goes up. हमारे आत्मीय जीवन भी ऊपर की ओर नहीं उठता है. Are you able to understand what I am telling you? इन सारे विषयों को आप समझ पा रहे हो? पीछे बैठने वालों को जगह चाहिए तो आगे जगह खाली पड़ी है, कुर्सी में बैठने वाले इधर आगे आकर बैठ सकते हैं. वैसे लेडी साइड में भी कुर्सी में आगे जगह पड़ी है, आप लोग आगे आइए. Do you understand what type of spiritual life we are having? आप समझ रहे हो कि किस प्रकार की आत्मीय जीवन में हम लोग हैं. Individually, we are not right, व्यक्तिगत तौर पर हम लोग सही नहीं हैं and families are so fallen. और परिवारों इतने गिर चुके हैं. In spiritual life, I am talking about. मैं आत्मीय जीवन के बारे में ही बात कर रहा हूँ. You have got AC bungalows, आपके पास एसी मकानों है, you have got AC vehicles, एसी गाड़ियां है आपके पास, and you have got AC offices. और एसी दफ्तरों भी है. Financially, you are better off. और आर्थिक रूप में आप बहुत ही सुखी है. You have a lot of money with you, आपके पास बहुत ही पैसा भी है, plenty of food for you, खाने के लिए बहुत ही भरपूर भोजन भी है, and your wardrobes are mostly full of clothes. और आपका वस्त्र रखने के लिए कबर्ड पूरा भरा हुआ है. Is this church for that? ये कलीसिया क्या इसी के लिए है? Is this for which the Lord has called us? यही काम से परमेश्वर ने हमें बुलाया है क्या? I don't think so. मुझे ऐसा नहीं लगता है. I am burdened in my heart मेरा हृदय में मैं बोझ से दबा हुआ हूँ, about me मेरे बारे में, and then about you. और उसके बाद आप. Repeat it. Repeat. All if I the sky, sun, moon, and stars like that. Upwards I fly, so all my song shall be. To thee, never my heart to thee, never to thee. Shall we be worshiping God for some time? क्या हम परमेश्वर की उपस्थिति में थोड़ा समय आराधना करेंगे? Those who have got perfect health. जिनके लिए अच्छा तंदुरुस्ती है. How many of you are having now, for the present, you are having a good health? अभी इस समय कितने लोग के पास अच्छा तंदुरुस्ती है? And those who are having health, please thank God and start worshiping God in spirit. जिनके पास अच्छा तंदुरुस्ती है, परमेश्वर को धन्यवाद करके आत्मा में आराधना करेंगे. Everyone who is sitting in the chair, सभी लोग जो कुर्सी पर बैठे हैं, everyone who is occupying the chair, कुर्सी में बैठने वाले हर एक व्यक्ति, you are to open your mouth and worship God. आप परमेश्वर के सन्मुख आपके मुंह को खोल के परमेश्वर की आराधना You करें. ought to open your mouth and worship God. आपके मुंह को खोलकर परमेश्वर की आराधना करें. Every boy, every girl, हर एक लड़का, हर एक लड़की lift your heads आपके सिरों को ऊंचा करे and pray. Worship God loudly. और प्रार्थना करे. आत्मा में परमेश्वर की आराधना करेंगे. Jesus says, यीशु बोलता है, God is spirit. परमेश्वर आत्मा है. God is spirit. परमेश्वर आत्मा है. Therefore, those who worship Him इसलिए उसके आराधना करने वाले must worship Him in spirit and truth. अवश्य है कि आत्मा और सच्चाई में आराधना करें. Louder. जोर से.
Every boy, open your mouth. Every girl, open your mouth. हर एक लड़की अपना मुंह खोल के परमेश्वर की आराधना करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 17 Lift your hands. Open your mouth and worship God. मुंह खोल के प्रभु का आराधना करे, मुंह खोल के आराधना करो। Everyone. धन्यवाद 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 Open your mouth and worship God. God has been so good to you. परमेश्वर तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा था, बिल्कुल अच्छा था, बिल्कुल अच्छा था। कुर्सी में बैठने वाले दया करके मुंह खोलो। Open your mouth, मुंह खोलो बहन, मुंह खोलो, मुंह खोल के आराधना करो। Adam bara 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 bajara ke dana bara shaura jana ke dana bara udara bara 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 jana ke dana bara hallelujah ridhani udara bara bajara jara jala uram bara 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 bajara ke dana bara glory dilu sabta bara bara bajara ke dana bara bara bajara ke dana udara bara bara bajara ke dana jala shaura bara jara 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 Agreda bara 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 bajara ke dana bara shaura jala ke dana shapraba hallelujah 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 धन्यवाद 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 we exalt you master we glorify you master oh we praise you master सारे प्रकार के बंधनों तोड़ा जाए सारे प्रकार का बंधनों तोड़ा जाए आत्मा का बंधन तोड़ दे प्रभु मानसिक बंधन तोड़ दे शरीर के बंधन तोड़ दे आत्मा का बंधन तोड़ दे शरीर के बंधन को तोड़ दे बीमार के बंधनों को तोड़े यीशु का नाम है जल जल बैठावर जल 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 बैठावर जल जरा जल 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 हरम बड़ा 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 जल के जल बड़ा 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 जल के जल बड़ा 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 जल बड़ा 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 जल के जल बड़ा 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 उजारा जल 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 उरम बड़ा 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 जल के जल बड़ा 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 उरम बड़ा 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 जल उड़ा बड़ा बड़ा उड़ा बड़ा शब्द नहीं शब्द धीरे धीरे जल जल
प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। कटकटाव खोलेगी, स्वर्ग की आशीष पाओ से अभी। कटकटाव खोलेगी, स्वर्ग की आशीष पाओ से अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना है। हालेलुया, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। घर में लटके प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, पूरी सारे प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, पूरी सारे प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। विश्वास से गाओ, विश्वास से गाओ। हालेलुया, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है। 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 हालेलुया, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है।
Are you deceiving yourself? क्या आप अपने आप को धोखा देते हो? Are you deceiving yourself? क्या आप आपको धोखा दे रहे हो क्या? It is my command. It is my master's command. मेरे स्वामी की आज्ञा ये है, It is my master's command. मेरा स्वामी का आज्ञा यह है, It is not a suggestion. ये कोई सुझाव नहीं है It is not an advice. और सलाह भी नहीं है, It is my master's command. मेरे स्वामी का आज्ञा है। What is their command? और वो आज्ञा क्या है? God is spirit. परमेश्वर आत्मा है। God is who has got this in your Bible? किसके बाइबल में ये लिखा हुआ है? Have you come to worship or have you come to worship God? क्या आप आराधना करने के लिए, परमेश्वर की आराधना करने के लिए आए हो? Two things I said. Have you come to worship or have you come to worship God? आप आराधना करने के लिए आए हो या परमेश्वर की आराधना करने के लिए आए हो? Will you open your mouth and say that? परमेश्वर की आराधना करें। Have you come to worship or have you come to worship God? क्या आप केवल आराधना करने के लिए आए हो या परमेश्वर की आराधना करने के लिए आए हो? Hindus worship, हिंदू वर्शिप Jains worship, और जैन की आराधना में, is Muslim worship, और मुस्लिम की आराधना में, Buddhist worship. और बौद्ध धर्म की आराधना में। Do you understand that? आप समझ रहे हैं? Have you come to worship or have you come to worship God? आप आराधना करने के लिए आए हो या परमेश्वर की आराधना करने के लिए आए हो? Will you please open your mouth and say, if you have come to worship God of the Bible, जो बाइबल का परमेश्वर को यदि आप आराधना करने के लिए आए हो तो those who are occupying the high chairs, जो बड़े कुर्सियों में बैठे हैं,
Those who are occupying the high chairs, जो ऊंचे कुर्सियों पर बैठे हैं, please listen very carefully. बहुत ही ध्यान से आप सुनिए। I am speaking to you from your Bible only. मैं आपके बाइबल से आपसे बातें कर रहा हूँ। I am speaking to you from your Bible only. आपके बाइबल से ही मैं बात कर रहा हूँ। Whether it is Malayalam Bible, चाहे वो मलयालम का बाइबल हो, whether it is Hindi Bible, हिंदी बाइबल हो, whether it is Telugu Bible, या तेलुगु बाइबल हो, whether it is a Nepali Bible. या नेपाली बाइबल हो, I am speaking from your Bible only. मैं आपके बाइबल ही से बात कर रहा हूँ। It is recorded in your Bible. आपके बाइबल में लिखा हुआ है। Gentlemen, will you please open your mouth? ए भाई, आपके मुंह को आप खोलोगे? Will you please open your Bibles? आपके बाइबलों को खोलोगे? It is found in the book of John. और यूहन्ना के पुस्तक में लिखा है। Which chapter? 4th chapter. यूहन्ना 4था अध्याय में। In your own language, will you please read it? आपके खुद की भाषा में क्या पढ़ोगे? John 4th chapter, यूहन्ना 24. 4 का 24। John 4:24. यूहन्ना 4 का 24। John 4:24. यूहन्ना 4:24। This is not John's word. ये यूहन्ना के खुद के वचन नहीं है। Those who are sitting in the high chairs, please listen. जो ऊंचे कुर्सी पर बैठे, मेहरबानी करके सुनिए। I am only reminding God's word to you. केवल परमेश्वर के वचनों को मैं आपको याद दिलाता The हूँ। Bible is not my Bible. बाइबल मेरा बाइबल नहीं है। The Bible doesn't contain my words. बाइबल के अंदर मेरे वचनों नहीं है। It is not containing John's words. और यूहन्ना की भी वचनों नहीं है बाइबल It में। is containing all God's words. सब कुछ परमेश्वर का ही वचनों बाइबल में लिखा हुआ है। Your master, आपका स्वामी, who gave his life for you, जिसने अपना जीवन आपके लिए दे दिया, by whose blood you have been washed and saved, और जिसके लहू के द्वारा तो आप धोए गए हो और उद्धार पाए हो, whom you always glorify. जिसकी आप हमेशा महिमा करते हो, You are still glorifying that Jesus. और उस यीशु की आप अभी भी महिमा कर रहे हैं। That Jesus says. वो यीशु कहता है, That Jesus says. वो यीशु कहता है, God is spirit. परमेश्वर आत्मा है, God is spirit. परमेश्वर आत्मा है, God is spirit. परमेश्वर आत्मा है, And his worshippers must worship. और उसके आराधना करने वाले अवश्य आराधना करें, Must worship. अवश्य आराधना करें, Must worship. अवश्य आराधना करें। What is that word must worship in Telugu? अवश्य आराधना करना तेलुगु में कैसा लिखा है? आराधिंपवलेनु। वाला तो वाला लेके आना चाहिए. What is that word must worship in Telugu, in Malayalam? నమస్కరించే తీరు, ఆరాధించే తీరు. Right. That means इसका मतलब, if you are not worshiping God in spirit, यदि आप आत्मा में उसकी आराधना नहीं करते हो तो, shall I be very frank? मैं आपको खुल्लम खुला बोलूं, Shall I be very clear to you? बहुत ही स्पष्ट आपको बताऊं, You are not worshiping God. आप परमेश्वर की आराधना नहीं करते हैं। My master says, मेरा स्वामी कहता है, must worship in spirit. अवश्य है कि आत्मा में आराधना करें। Who is great? Your pastor is great or your master is great? आपका पास्टर बड़ा है या आपका स्वामी बड़ा है? बोलिए। Your master is great. That fellow is not listening. That prince. Your master is great or your pastor is great. आपका स्वामी बड़ा है या आपका पादरी बड़ा है? Your church is great or your master is great. आपका चर्च बड़ा है या आपके परमेश्वर बड़ा है? That fellow doesn't listen. Who is great? कौन बड़ा है? This body of church members is great or Jesus is great? और इस कलीसिया बड़ा है कि Open your यीशु mouth बड़ा है? louder. Hallelujah. हालेलुया। You may be millions. आपके पास लाखों रुपया होगा, You may be millions. आप लाखों की तादाद में होंगे, But my master is greater than all of you. लेकिन मेरा स्वामी आप सभी से बढ़कर है। So my master says, मेरा स्वामी कहता है, you must worship God. आप परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। Mr. Sanjay Pakira, my master says, मेरा स्वामी कहता है, you worship God. परमेश्वर की आराधना करो। How you should worship God? किस प्रकार परमेश्वर की आराधना करना है? Must worship in spirit. अवश्य की आत्मा में आराधना Now I करें। want to ask you, मैं अभी आपसे पूछना चाहता how हूँ, many of you worshipped my master this morning? आपने कितने लोग ने आज सुबह को मेरा स्वामी की आराधना किया? I may be blunt, मैं ऐसे खोलकर बोलता हूँ, but I am sincere. लेकिन मैं सच्चाई से बोलता हूँ, I may be sharp,
और मैं बोलने में तेज but बोलता I'm हूँ, faithful to the word of God. लेकिन परमेश्वर का वचन के सामने It विश्वास is my business to tell you, मेरा काम यह है कि बताऊं you ought to worship God in spirit. और परमेश्वर को अवश्य की आत्मा में आराधना करे। And he may say in a different way, और अलग रीति से बोलूं तो otherwise, नहीं तो my master may not be accepting your worship. मेरा स्वामी आपकी आराधना को स्वीकार नहीं करेगा। Your 3 hours of coming and sitting here is in vain. आपका 3 घंटा यहाँ पर आराधना करना व्यर्थ हो जाएगा। I am very clearly speaking logically. और बुरा मैं स्पष्ट रीति से आपको खोल There कर is बोलता no हूँ, hidden truth. इसका अंदर कोई छिपा हुआ It सच्चाई is नहीं, plain speaking. बिल्कुल साफ साफ बोला है, This is plain speaking. बिल्कुल साफ बोलता हूँ। My master says, मेरा स्वामी कहता है, my Lord says, मेरा प्रभु कहता है, your Redeemer says, आपका छुटकारक कहता है, your master says, आपका स्वामी बोलता है, God is spirit. परमेश्वर आत्मा है। Is it in your Bible? लिखा है आपकी बाइबल It's में, in your Bible. इस प्रकार And लिखा है। that same Jesus says, और उसी यीशु कहता है, you must worship him in spirit. और तुम अवश्य उसकी आराधना आत्मा में करो। I gave you time to worship in spirit. मैंने आत्मा में आराधना करने के लिए समय आपको दिया, But many of you are indifferent in the presence of God. लेकिन आप में से कई लोग परमेश्वर के सानिध्य में लापरवाही है। You have not come to exhibit yourself here. आपने अपने आप को प्रदर्शन करने के लिए यहाँ नहीं आए हो, This is not a place of exhibiting yourself to the other people. और दूसरों को दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए आप यहाँ नहीं आए हो। God sees your heart. परमेश्वर आपका हृदय को देखता है, God sees your heart. परमेश्वर आपका हृदय को देखता है, He doesn't see your clothes. आपके वस्त्रों को नहीं देखता है, He doesn't see your fashion. और आपके फैशन को नहीं देखता He है, doesn't see your charm or beauty. आपके सुंदरता को वो नहीं देखता है। Are you able to understand that? इन बातों को समझ रहे हैं? You deceivers, आप धोखा देने वाले you हो, are deceiving yourself. अपने आप को धोखा देते You हो। can't deceive my master. मेरे स्वामी को अब धोखा नहीं दे I want to पाओगे। tell you, मैं आपको बोलना चाहता with हूँ, all humility, सारी नम्रता के साथ humble yourself. अपने आप को नम्र करो, Put your arrogancy out. आपके हठीलापन को निकाल दो, Put your pride out. आपके घमंड को उतार दो, Humble yourself. अपने आप को दीन करते हुए Break your hearts. पर आपका हृदय को बनाकर, Break your hearts. आपके हृदय को And तोड़कर cry to Jesus, और यीशु के पास रो, Master, हे स्वामी I am sorry. मैं बहुत ही, Cleanse me. मुझे धो लो, हे Master, मास्टर I am sorry. मैं बहुत ही Cleanse me. मुझे धोकर शुद्ध I करो। am full of pride. मेरा अंदर बहुत ही घमंड I है, am full of arrogancy. मेरा अंदर हठीलापन है, Please forgive me. मुझे माफ करो, Fill me with the Holy Spirit. तेरे आत्मा से मुझे भर दो, Fill me with the Holy तेरे Spirit. आत्मा से मुझे भर दो। I want you to fill me with the Holy मैं Spirit. ये चाहता हूँ कि तेरी आत्मा से तू मुझे भर Will दे। you come to Him? क्या उसके पास To आओगे? every member who is occupying the high seas. जो लोग ऊंचे कुर्सियों पर बैठे हैं, Anytime your call may come. कभी भी आपका बुलावट हो सकता है, Anytime your invitation may come. कभी भी आपका निमंत्रण हो सकता And है, when the call comes, और जब उस बुलावट आएगा, you shall not be found lacking. और आपके जीवन में तभी कोई गति ना You होना shall चाहिए, not be found lacking. आपके जीवन में कोई कमी ना होना चाहिए। My God is Spirit. मेरा परमेश्वर आत्मा है, Jesus is Spirit. यीशु आत्मा है, God's Spirit, Holy Spirit is Spirit. और परमेश्वर की आत्मा वो आत्मा है। This morning, आज सुबह को to you and to me, आपको और मुझे God has extended mercifully your life. परमेश्वर ने अपने हमारे लिए परमेश्वर अनुग्रह के द्वारा हमारे जीवन को बढ़ा कर दिया है, Hundreds and thousands of your family members, और हजारों लोग, आपके परिवार के लोग, hundreds and thousands of your known people, हजारों लाखों आपके जान पहचान के लोग, without getting any notice, और कुछ भी जानकारी के बिना, they were removed from the surface of this earth. और इस पृथ्वी में से निकाले गए। The people who were playing with you, जो लोग आपके साथ खेलते थे, the people who were worshipping God with you, जो लोग आपके साथ परमेश्वर की आराधना करते थे, the people who were studying with you, जो लोग आपके साथ पढ़ाई कर रहे थे, the people who were befriending you और ये लोग आपके साथ थे without any notice, और कोई भी पूर्व they जानकारी were के बिना, suddenly removed from the surface of this earth. और इस पृथ्वी में से अचानक से वो चले गए। But God has kept me and you in this surface लेकिन परमेश्वर ने मुझे और आपको इस पृथ्वी पर क्यों रखा है? to humble yourself, अपने आप को नम्र करने के to लिए, empty yourself all filth and sin. सारे पाप और गंदगी से अपने आप को खाली करने के Seek लिए। the face of God परमेश्वर का चेहरा को देखो and worship Him in spirit. और उनको आत्मा में आराधना
आराधना करो, Worship in spirit. आत्मा में आराधना करो। God has not come here to see your charm. परमेश्वर आपका सुंदर चेहरा को देखने के लिए God नहीं has आया। not come here to see your beauty. परमेश्वर आपकी सुंदरता को देखने नहीं आया। God has not come to see your dress. परमेश्वर आपके वस्त्र को देखने नहीं आया। God has not come to see your qualification. परमेश्वर आपकी योग्यता को देखने नहीं आया He है। wants to see your humble heart, वो आपके नम्र हृदय को देखना चाहता your है, clean heart. आपके शुद्ध मन। We are going to chair occupying people. कुर्सी में बैठे हुए लोग, God is giving you notice. परमेश्वर आपको एक We नोटिस are दे रहा going to है। sing the song once again. उस गीत को हम फिर से गाने वाले हैं। Once again, kneeling down. All those who have got some health, they can kneel down. जिनके पास अच्छा तंदुरुस्ती है और अपने घुटने में आ जाए। Those who have got some health, they can kneel down. जिनको थोड़ा तंदुरुस्ती अपने घुटने पे आ जाए। प्रार्थना करे, आराधना करे वो अच्छा है कितना Close your eyes. आंख बंद करो. हालेलुया प्रार्थना करे वो अच्छा है कितना भला है छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा मुंह खोलो, मुंह खोलो. तुम्हें मिलेगा आंख बंद करो, आंख बंद करो.
The other day, Brother Yogesh was trying to explain to you something. पास्टर योगेश आपको कुछ विषयों को समझाने के लिए कोशिश कर रहे थे I have tried to make you understand that. और मैं भी आपको वो समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। And if you are pertinent, and if you refuse to understand, what shall we do that? यदि आप उसको मानने से, आपको समझने से इनकार करते हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? We are here to make you understand. हम यहाँ पर आपको समझाने के लिए कोशिश करते It हैं। is for you to open your hearts. आप दिया था Romans, रोमियो, great men who are sitting in the chairs, जो लोग कुर्सी में बैठे हुए हैं, great ladies who are occupying the chairs. और बहनों जो कुर्सी पर बैठी है, Pure word of God. परमेश्वर का बहुत ही शुद्ध वचन। This is pure word of God. ये वचन परमेश्वर का है और शुद्ध है It's a clear word of God. और बहुत ही स्पष्ट परमेश्वर का वचन है। Are you a Jew or you are a Gentile? आप यहूदी है कि अन्य जाति है? We are all Gentiles. हम सभी लोग अन्य जाति है।
whether you are from the Cape, whether you are from the Cape, आप केप में से हो whether you are from Kashmir, या आप कश्मीर से हो whether you are from Kutch, या आप कच्छ से हो or are you from Kohima, या कोहिमा से आते हो, we are all coming from Gentile. हम सभी लोग अन्य जाति में से आते हैं, We are all non-Jews. हम सभी लोग गैर यहूदी हैं। God wants to accept you and me. परमेश्वर आपको और मुझे अंगीकार नहीं तो स्वीकार करना चाहता है। Matthew, you are a school going boy, please sit erect. Otherwise, you come and sit with me. So please leave that poor man. Don't harass him. He is harassed by his job. सबको हम पसंद भी करते हैं, So I am a priest. समान बुलाया नहीं गया है। Unless a man is called like Aaron, जब तक एक मनुष्य हारून के समान बुलाया नहीं गया है nobody takes upon himself this position of honor. और इस सम्मान की पदवी कोई अपने आप से अपने ऊपर लेता नहीं Is it in है। your Bible? आपके वचन में लिखा है, Book of Hebrews, इब्रानी right? Fifth chapter. Fifth chapter, इब्रानी 5वां अध्याय 4th verse. 4था वचन। Every gentleman who is occupying the high chairs and every lady भाई who और is बहनों जो occupied- कुर्सी पर बैठे पढ़िए, no one takes this honor upon himself. ये आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता, He must be called by God, परमेश्वर उसको बुलाना चाहिए। just as Aaron was. जिस प्रकार हारून भी परमेश्वर की ओर ठहराया गया था। Moses was called for God's ministry. मूसा को परमेश्वर की सेवकाई के लिए बुलाया गया, Aaron was called for God's ministry. हारून को परमेश्वर की सेवकाई के लिए बुलाया गया, Peter was called for God's ministry. पतरस परमेश्वर की सेवकाई में बुलाया गया, Paul was called for God's ministry. पौलुस परमेश्वर की सेवकाई के लिए बुलाया गया, Barnabas was called for God's ministry. बरनबास को परमेश्वर की सेवकाई के लिए बुलाया गया। You would understand that? आप समझ रहे हैं, God's word is right. परमेश्वर का वचन सही है, Man's teaching may be wrong. मनुष्य का उपदेश गलत हो सकता है, God's word is right. परमेश्वर का वचन सत्य है। So this is the New Testament word. ये नया नियम का वचन है, This is the New Testament word. नया नियम का वचन ये है, God's warning is there. परमेश्वर का चेतावनी ये है, Don't become preachers. प्रचारक न बनो। Is it right in your Bible? The book of James, it is written there याकूब के पत्री में लिखा है, that we may keep this word and one more word you put. Can you put two words? Can you put together? That's beautiful. James, याकूब நாம் அதிக தண்டனை அடைவோம் என்று உங்களில் அதிகம் பேர் போதகராகாதிருப்பீர்களாக. யாக்கோபு. Which chapter? Which chapter? तीन का 1. Third chapter, James, third one. याकूब James 3:1. याकूब 3 का पहला वचन। James 3:1. Not many of you should presume to be teachers, my brothers, because you know that we who teach will be. आप ऐसे करना मेरे आगे के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, because I am becoming old, no, not I am like you. Because who teach will be judged more strictly. हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक न बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशकों और भी दोषी ठहरेंगे। నా సహోదరులారా, బోధకులమైన మనము మరి కఠినమైన తీర్పు పొందుదమని తెలుసుకొని మీలో అనేకులు బోధకులు కాకుండా ఉండిరి. സഹോദരന്മാരെ, അധികം ശിക്ഷാവധി വരും എന്നറിഞ്ഞ് നിങ്ങളിൽ അനേകർ ഉപദേഷ്ടന്മാർ ആകരുത്. என் சகோதரரே, அதிக ஆக்கினை அடைவோம் என்று அறிந்து உங்களில் அநேகர் போதகராகாதிருப்பீர்களாக. నీవు మంచిగా చక్కగా చదవాలి, కానీ వినబడే వరకు చక్కగా అర్థం అవుతుందా? అందరికీ అది రాదు. చక్కగా చదువు. నా సహోదరులారా, నా సహోదరులారా, బోధకులమైన మనము నేను కూడా బోధకుడు, నాకు కూడా బోధ తెలుసు. మాస్టర్ గారు నాకు మాత్రం సావకాశం
ఇవ్వలేదా? నేను కూడా బోధకుడు, నీ కొరకే రాశారు, నా కొరకు కూడా రాశారు. నా సహోదరులారా, బోధకులమైన మనము బో- అయ్యే, బోధకులమైన బోధకులమైన మనము మనము మరి కఠినమైన मरी पापा 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 मतलब आपको एक मारो तो मेरे लिए 10 मार मिलेगा। तो भी आप बोलते हैं मुझे प्रचार करने को प्रभु देता ही नहीं है। तो भी बोलते हैं मुझे प्रचार करने के लिए नहीं देता है। पास्टर से मैं अच्छे से प्रार्थना प्रचार करूंगा, वर्गीस अंकल से मैं अच्छा प्रचार करूंगा, मैथ्यू अंकल से मैं अच्छा प्रचार करूंगा। ఎందుకు రాయిది? మరి 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 కఠినమైన తీర్పు. ఏమైనా తీర్పు? കഠിനമായ തീർപ്പ്. മലയാളത്തിലൊന്ന് വായിച്ചാട്ട് കേട്ടോട്ടെ. പുത്രന്മാരെ, അധികം ശിക്ഷാവധി വരും എന്ന് അറിഞ്ഞ് നിങ്ങളിൽ അനേകർ പ്രസംഗിക്കുന്ന എനിക്ക് എന്താ വരും? നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇടിയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് 10 ഇടി കൊള്ളും. എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കൊതിയാ. എന്നെന്താ പ്രസംഗിക്കാൻ വിടാത്തെ? എന്താ മാത്യുവിനെ പ്രസംഗിക്കാൻ വിടുന്നത്? ഞാൻ മാത്യുവിനേക്കാൾ നന്നായിട്ട് പ്രസംഗിക്കുമല്ലോ. വായിക്കേ. അധികം ശിക്ഷാവിധി വരും എന്നറിഞ്ഞ് നിങ്ങളിൽ അനേകർ ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാർ ആകരുത്. मुझे प्रचार करना, मुझे सिखाने का आता है. दिस इज इन योर भाई. ये आपके बाइबल में लिखा हुआ वचन है. In God's fine to conduct the meeting. जब जॉर्ज भाई यहाँ पर बैठे, उनके छोटे भाई से मैं बोलता हूँ कि आराधना को चलाओ. I still love George. जॉर्ज ब्रदर से मैं फिर भी अभी भी प्रेम करता हूँ. I like George. ब्रदर जॉर्ज को मैं पसंद करता How हूँ. can't I make him to stand here? यहाँ पर उनको क्यों मैं खड़ा नहीं You करता? mean to say I'm a fool? क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं मूर्ख He हूँ? lived with me for 1 or 2 years, right? मेरे साथ 1 या 2 2 साल years? मेरे साथ भाई रहे थे. 1 or 2 years. He lived with me. मेरे साथ 1-2 साल रहे थे. Don't pretend to be great. आप बड़ा है करके ऐसा दिखावा ना करें. When the grace is in you, जब अनुग्रह आप में है, my master will tell, मेरा स्वामी मुझसे कहेगा, this man is now fit. ये व्यक्ति अभी इसके लिए योग्य है, You give him this chance. ये मौका उसको दे दो. So unless a person is called like Aaron, जब तक एक मनुष्य हारून के समान बुलाया नहीं गया this हो, is a teaching in the New Testament. ये नया नियम का उपदेश है, This is not Old Testament teaching. पुराना नियम का उपदेश नहीं है. Hallelujah. हालेलुया. Unless a man is called like Aaron, जब तक एक मनुष्य हारून के समान बुलाया नहीं जाता, nobody takes upon himself this post of honor. ये आदर का पद कोई अपने ऊपर नहीं लेता है. Praise God. Praise the Lord. The Spirit of God is leading me. Therefore, I'm परमेश्वर की teaching. आत्मा मुझे चला रही, इसलिए मैं बता रहा हूँ. Hallelujah. Praise the Lord. Keep humble. नम्र हो जाइए, Keep yourself humble. अपने आप को दीन करिए. When you keep yourself humble, जब अपने आप को दीन बनाओगे, the Lord will exalt you at the right time. परमेश्वर योग्य समय में आपको ऊंचा करेगा. Hallelujah. Praise the Lord. Where are we now standing? हम कहाँ पर खड़े हैं? Hallelujah. Praise the Lord. Our topic is like that Abraham. हमारा इब्राहिम के समान है. We are now in the post of Abraham. हम इब्राहिम के उस पद में हैं. I cannot stop teaching that to you वो पढ़ाने से मैं अपने आप को रोक नहीं सकता हूँ. unless you digest it. जब तक आपको पाचन होगा तब तक God will keep on pounding upon you this word of God. ये परमेश्वर का वचन परमेश्वर आपके ऊपर डालते रहेगा. This morning we had a wonderful devotion. आज सुबह का बहुत ही अच्छी आराधना हुआ था. How many of you were present in the church by जो- 5 o'clock? सुबह 5 बजे के आराधना में कितने लोग आए थे? Let the whole church see that. पूरा दो Let the people see your hand. और सभी लोग आपके हाथों को देखने दो. We were having a wonderful worship in the morning. आज सुबह को बहुत ही सुंदर आराधना हुआ था. Almost 50 or 45 minutes, 50 minutes we were having worship. Am I right? 45 से 50 मिनट तक आराधना हुआ. I think every one of you should have such worship in your home. मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा आराधना सभी के घर पे होना Will you चाहिए. please stand up, brother? Will you please stand up? Please stand up. You belong to Mr. Arun Prasad. Will you please stand up? Arun Prasad. तो अरुण प्रसाद का बेटा है. In his house there are 4 persons. इनके घर पे 4 लोग रहते हैं. Am I right?
This man, ये व्यक्ति, his mother, इसका मम्मी, his father, इसका पापा and his co-brother. What do you call cousin brother? और इनका रिश्तेदार का भाई, Every day morning at 5 o'clock. और सुबह 5 बजे, Madam, will you please stand up? Also there for the morning worship. Every day morning 5 o'clock. हर एक दिन सुबह 5 बजे You must have such a worship in your home. ऐसा आराधना आपके घर में भी होना And चाहिए, every day evening also. और हर एक दिन शाम को भी All the four of you must have such worship in your home. आप चारों मिलकर ऐसा आराधना आपके घर पे करना चाहिए। I desire मैं चाहता हूँ, above all my God desires. उससे भी अधिक मेरा परमेश्वर ये चाहता है। You won't say praise the Lord. Office.